हेलो एवरीवन हियर एंड फ्यू अपकमिंग वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। और ये टर्म्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए सो आप किसी भी कोड को आसानी से समझ सकते हो एंड समझा सकते हो किसी भी पर्सन को, एंड ऑल्सो आपकी जो डिबगिंग स्किल्स है वो भी परफेक्ट हो जाएंगी। सो जो कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती हैं, उनमें से दो आज हम समझेंगे। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल। नाउ बहुत सारे लोग इसमें बेसिकली जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग, वो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। उन्हें समझता नहीं है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड वेरिएबल। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहले अगर किसी भी डेटा की बात करें जो कि कोड में यूज़ कर रहे हैं या प्रोसेस करना चाहते हैं फर्दर, न्यूमेरिक हो, किसी का नेम हो, एनीथिंग, तो वो जो डेटा है उसे अपन वैल्यू टर्म से रेफर करेंगे। लेट्स से 5, सो इट इज़ अ वैल्यू। ओके, नाउ इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए, ठीक है, इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए इसको कुछ नेम देना होगा टू यूज़ इट फर्दर इन द इनसाइड कोड। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3। ओके, अगर इस तरह का अगर मैं कोड लिख रहा हूँ, सो जब 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 3 लिख रहा हूँ तो मेरे को 2 बार 5 लिखना पड़ रहा है। नाउ अगर इस वाले पार्ट पे मुझे मान लो चेंज करना है, लाइक लेट्स से मुझे 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई करना है 2 एंड 3 को। ओके, लेट्स जस्ट राइट इट हियर, प्रिंट 5 into 2 and print 5 into 3. Okay, now if I want to change it with 6, then I need to change at two places. Similarly, अगर आपका कोड और बड़ा हुआ तो आपको उतनी ही जगह चेंज करना पड़े। To avoid this situation, we use variables. And जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होगा, it is not even possible to write code like this. Hard coded value, hard coded logics नहीं हो सकते। This value can be anything. If it's, let's say it's user's age who enters it, so it varies, so you can't hard coded it. In certain scenarios we use variables. Now what is variable? Variable is basically a name given to that data. Similarly, a name given to you, you are a person. Okay, similarly this is a value. Now you have given a name by which everyone calls you. Similarly, we also given a name to this particular data, let's say A, or to be more meaningful name, num1, it's num1. Now on place of 5, we can use this number. Okay, so this is what known as variable. Okay, so you use variables referencing to a data. So let's say there is another value, let's say your name, and you want to print this name, okay, at two places, print and print. Now you also don't want to write it at two places, so what you will going to do, you will going to assign this value to a variable and you give name 1, and you can use this, right? Now here's the catch. What happens when you write such code, that your compiler doesn't know these characters are actually value and these characters are actually variable. So to distinguish a value with characters inside it from a variable, we use a literal, that is way of expressing this code. We use this. This is what known as a value or a string. So basically, whenever you are dealing with any data which have characters in it, you have to use this thing. You have to write it in this particular way, like single quotes, or you can use it with double quotes. So for numerical values you can directly use them, but for string kind of values, for a text based values, you have to use double quotes around it. Okay, so that your computer can know, like, this is something, this is a variable and this is a value. Hope this clears the confusion of values and variable. In further more videos, I'm going to explain you such basic concepts. But trust me, when we are started working on some bigger programs, and we have to understand the logic of those
code, then I'm going to use the terms this value, the value of this will be assigned, and this variable will reference to this particular value, and something like this. And that time it becomes too crucial to understand it with the Go, instead of wondering about what does value mean and what does variable means. It will easy for you to learn further. Thank you.